Dear friends, on behalf of the Indian National Young Academy of Science, I, Sriparna Chatterjee, welcome you all to the INYAS Podcast series Trailblazer under its flagship event Wisdom. Wisdom is Women in Science Domain. In our first episode of Trailblazers, we have Dr. Niti Kumar from Central Drug Research Institute, Lucknow as a guest. Dr. Pooja, Core Committee Member INYAS from CSIR Central Scientific Instruments Organization, Chandigarh, will be in conversation with Dr. Niti. Dr. Niti pursued her doctoral work at the CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology, and then she was at Max Planck Institute of Biochemistry as a postdoctoral fellow. Niti has received several prestigious awards. To name a few, Swarna Jayanti Fellowship, SCRB Women Excellence Award, Innovative Young Biotechnologist Award, Ramalingam Swami Fellowship, INSA Medal for Young Scientist, EMBO Postdoctoral Fellowship, Alexander von Humboldt Fellow, Marie Curie Early Stage Research Fellowship. Thank you, Sriparna, and welcome to our guest, Dr. Niti, to INYAS Wisdom Podcast series Trailblazer. इस सीरीज में हम विमेन अचीवर्स को इनवाइट करते हैं और हमारे लिसनर्स को उनकी जर्नी के बारे में बताते हैं। आज यह हमारा फर्स्ट एपिसोड है। आइए हम अपनी गेस्ट डॉक्टर नीति से बातें करें। Thank you, INYAS, for giving me an opportunity to connect with aspiring science students. So, to start with, चलिए आपकी STEM जर्नी और रिसर्च वर्क के बारे में जानते हैं। आपकी लैब किस एरिया में काम करती है? Well, my lab is a stress biology lab, wherein we are trying to understand how the malaria parasite is able to survive under different stress conditions. जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मलेरिया पैरासाइट है, it requires both human host as well as a mosquito vector to complete its life cycle. But अपनी इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जब ये पैरासाइट ह्यूमन एंड मॉस्किटो में ट्रांजिट करता है, वहाँ पे इसको उनके रिस्पेक्टिव इम्यून सिस्टम्स बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि पैरासाइट ग्रो ना करे. बट इस आर्म्स रेस में पैरासाइट जीत जाता है और इन्फेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है. So my lab is trying to understand what are the pathways which give survival advantage to the parasite. And in addition to this, my lab is also involved in drug screening for antimalarials. हम लोग ऐसे small molecules, chemical entities को के लिए स्क्रीनिंग करते हैं which would be effective against drug resistant parasite. जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंट इन्फेक्शंस में आजकल ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है. एंड दिस हैज़ बीन ऑल्सो रिपोर्टेड फॉर मलेरिया. सो वी आर लुकिंग फॉर मॉलिक्यूल्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ड्रग सेंसिटिव एज वेल एज ड्रग रेजिस्टेंट पैरासाइट. वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर नीति. क्या आप चाइल्डहुड से ही विज्ञान क्षेत्र में आना चाहती थी और या आपको किसी से प्रेरणा मिली? इसके बारे में कुछ बताइए. वेल, इट वॉज नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन. पढ़ाई करना अच्छा लगता था और पेरेंट्स ने भी पढ़ने से नहीं रोका. और पढ़ाई के दौरान आई मेट वंडरफुल टीचर्स इन स्कूल, इन कॉलेज एंड ड्यूरिंग माई PhD, एंड ऑल ऑफ देम मेंटर्ड मी, groomed me and guided me during ups and downs in the research life. That's so wonderful, Dr. Niti, to know that you got great people to inspire and mentor you. We also would like to know what made you to choose biological science as your career domain over other subjects. During my studies, chemistry, biology, physics तीनों में बहुत इंटरेस्ट था. बट जब माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया को देखा और उसकी रॉड्स एंड कोकाई शेप देखी तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बायोलॉजी में बढ़ गया. हमारे टाइम पे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट आजकल इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की अपॉर्चुनिटी है वेरन नॉलेज ऑफ वन फील्ड कैन बी applied effectively in other fields. So आजकल everything is linked. Chemistry, biology, physics is linked. So
मेरा सजेशन सब स्टूडेंट्स से ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए हर सब्जेक्ट में, एंड अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन सर्वाइव इन एनी फील्ड. वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर नीति। आपके ग्रुप ने कुछ टेक्नोलॉजीज भी डेवलप की हैं एंड आई बिलीव इट रिक्वायर्स वर्किंग विद एन इंटरडिसिप्लिनरी टीम। कैन यू हेल्प आवर लिसनर्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द टेक्नोलॉजीज दैट यू हैव डेवलप्ड? Sure, Pooja. This was a classic example of an interdisciplinary team. And we had people from chemistry, physics, and biology. We worked together to develop indigenous technology. आप सबने कोविड के लिए RT-PCR टेस्ट करवाया होगा. इसमें फ्लोरेसेंट डाई एंड क्वेंचर यूज़ होते हैं जो एक सिग्नल या रीड आउट देते हैं, जो हमें बताते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है. सो यूजुअली ये रॉ मटेरियल जो है ये इंपोर्ट होते हैं. एंड आपको याद होगा फर्स्ट वेव के दौरान तो RT-PCR टेस्टिंग भी बहुत लिमिटेड हो रही थी बिकॉज हमारे पास इतनी किट्स भी नहीं थी. सो हमारी टीम के कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर थे, बट हमने कभी इस फील्ड में काम नहीं किया था. बट ड्यूरिंग पैंडमिक वी स्टार्टेड थिंग्स फ्रॉम द स्क्रैच, एंड many a times there were moments of stress, high pressure, we failed many times. But ultimately I feel really proud that हमारे students ने enthusiastically काम किया, and हम सब ने इन 2 सालों में एक भी संडे ऑफ नहीं लिया. And we are able to develop indigenous fluorescent dyes and quenchers which can be used for RT-PCR based detection of different infections. It is not restricted only to COVID, but also for respiratory viruses and other infections. Congratulations, Dr. Niti, for developing very important technologies during COVID time. Well, हम आपके रिसर्च ग्रुप के बारे में भी जानना चाहेंगे. And according to you, how R&D is a suitable career choice for girls? Currently I have 6 PhD students, जिसमें 2 मेल्स हैं and 4 फीमेल स्टूडेंट्स हैं. एंड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट मेरे 3 PhD स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैरिड है, और उनमें से एक PhD स्टूडेंट इज़ अ मदर ऑफ 2 किड्स. उसका एक 7 साल का बच्चा है और एक 2 साल का बच्चा है. एंड when she came to my lab, she was already pregnant with her second child, and I took her because she was determined and passionate that she wants to, have a career in science. So ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है या बताती है कॉन्स्टेंटली कि शायद शादी के बाद रिसर्च करियर नहीं हो सकता है, या शादी के बाद PhD नहीं हो सकती है, या बच्चों के बाद PhD नहीं हो सकती है. बट दिस इज़ अ फैंटास्टिक एग्जाम्पल. एंड आजकल तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड पीपल आर सपोर्टिव. आपकी फैमिली तो सपोर्टिव है ही है, बट ऑल्सो द इंस्टीट्यूशंस आर सपोर्टिव फॉर स्टूडेंट्स. So irrespective of your motherhood or irrespective of your marital status, I think we have that taboo or hesitation in mind. So my request to all young girls out there is to, spread their wings and fly. There are a lot of opportunities, and utilize these opportunities effectively. That's really inspiring. I'm sure it must have motivated many of our listeners. So, apart from research, what other thing you like to do in your free time? I am a sports person, and it helps me to maintain physical and mental health. I'm a decent badminton player, and I like trekking. I like going to the mountains. Wow, that's actually very exciting, Dr. Niti. So at the end, any specific message you want to give to the young aspiring girl who are willing to choose STEM as their career? My advice to young girls is that they should know their subject. Their concepts have to be clear. Secondly, they should look for mentors. They should not hesitate to ask for help. And for their professional growth, they need a support system. And this support system can comprise of family, friends,
teachers. Sometimes we are just grabbed in our mental fears. So in fears से बाहर आना है, roadblock से डरना नहीं है. And once again, I would like to emphasize, spread your wings and fly. Sky is the limit. Thank you, Niti, for such a nice discussion and your valuable time. We wish you good luck for your upcoming projects, future. We are also proud to have you in our INYAS team. Thanks, Pooja. It is very satisfying that if we see that we are able to inspire and groom talent in our country. And once again, thank you, INYAS, for giving me the opportunity. And thank you, Shriparna and Pooja, for hosting this event. You just heard about the amazing journey of Dr. Niti from Central Drug Research Institute, Lucknow. Next week, we'll be right here with another exciting story for you. Meanwhile, if you have any queries or suggestions, please drop an email at inyasindia@gmail.com. Till then, bye-bye, take care, enjoy your weekend.